So, Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we are discussing about the existence and uniqueness of the solution, and also what's gonna determine it. So up to now, I have explained you two different type of second-order differential equation. One is constant coefficient, another is a variable coefficient. So the two type of differential equation are the two types of differential equations mean second order linear and homogeneous linear and homogeneous with constant and variable coefficient such as like y double dash plus a y dash plus by is equal to 0. This is the one type. Another type is x square y double dash plus ax y dash plus by is equal to 0. The solution of these two types of differential equation always exist. इन दोनों की solution हमेशा exist करेगा. There is a because everything resulted explicitly because everything resulted clearly from our calculation about these two types. Suppose we have a differential equation. Suppose we have a second order differential equation with a variable coefficient, say p of x and p of x, such as y double dash plus p of x y dash plus q of x is equal to 0 with a condition with initial value condition like y of x naught is equal to k naught and y dash of x naught is equal to k1. अगर इस किस्म की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट हो
तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने देखना होगा कि इसकी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इसकी एग्जिस्ट सोल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा जी, दैट सोल्यूशन विल एग्जिस्ट इसके लिए एक शॉर्ट सा थ्योरम है जी, दैट सोल्यूशन विल एग्जिस्ट solution will exist for the initial value problem. Solution of the above uh, initial value problem will exist if p of x and q of x are continuous function. If p of x and q of x are continuous function on some interval I, on some often interval I, and x not as a point when x naught is a point and x naught is an I, then the initial value problem then the initial value problem then the initial value problem consisting of 1 and 2. This is suppose 1 and this one it is a 2 has a unique solution. A unique solution then it has a unique solution dy of x on the interval ये एक शॉर्ट सा थ्योरम है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट है जी। वेरिएबल कोएफिशिएंट एक पी ऑफ एक्स है दूसरा क्यू ऑफ एक्स है। ये इनिशियल वैल्यू कंडीशन इसके साथ है तो देन इट इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इस ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा जब आपके साथ ये पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों कंटिन्यूस फंक्शन हो एक इंटरवल पे ना, कोई भी इंटरवल सपोज दैट इंटरवल हो इज आई और एक्स नॉट हमारे पास कोई एनी पॉइंट है जो यहाँ पे जहाँ से ये इनिशियल कंडीशन स्टार्ट हो जाता है ना, एक्स नॉट इज एनी पॉइंट इन दैट इंटरवल सो द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कंसिस्टिंग ऑफ 1 and 2 it will have a unique solution in that interval। अगर ये थ्योरम जो है ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होता है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तो हम कहते हैं कि दिस द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन विल एक्सिस्ट। अब आते हैं ये कि अगर इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमने देखना होगा कि इसके सॉल्यूशन जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ना। हम क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड है जी, लीनियर
independent solution. Linearly independent solution कब होगा जी? Linearly independent solution, for example, the general solution of an open interval I is a let y1 and y2 uh, are the basis for the general solution of equation number let they are the best for the general solution of equation number 1. Uh, they will be independent. They will be independent f. They will be independent if it satisfy the condition like c1 y1 plus c2 y2 is equal to 0, whether c1 and c1 is equal to 0 and c2 is equal to 0. Otherwise, if c1 is not equal to 0 or c2 is not equal to 0 or c1 and c2 both are not equal to 0. Uh, if not 0 are dependent. They will be independent if c1 y1 or c2 y2 it's equal to 0 with the condition c1 and c2 are also equal to 0. अदरवाइज अगर ये C1 0 ना हो या C2 0 ना हो या दोनों 0 ना हो तो ये हमारे पास कंडीशन है लीनियरली डिपेंडेंट के लिए. अब इसके अलावा इसकी एक और भी डिटर्मिनेंट्स है जिसको हम रंस्कन डिटर्मिनेंट्स कहते हैं ना. ये लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट इस केस में the ODE of question number 1 the ये टॉपिक तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करवा चुका था. ये पिछला वाला टॉपिक ना ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है जी. लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड independent solution. Linearly dependent and independent solution. Linearly dependent and independent solution. The ODE 1 have a continuous the ODE in equation number 1 with a variable coefficient p of x and q of x. P of x and q of x on in open interval I. The two solution
the two solution say y1 and y2 are linearly independent on I. F and only F here Woranskain determinants. If the Woranskain determinants such as W of y1 y2 is equal to y1 y2 y1 dash and y2 dash x equal to y1 y2 dash minus y2 y1 dash if w is equal to 0, if w is equal to Woranskain determinants is equal to 0 at some x naught in I, and some x naught in I, so then it is called अगर ये ज़ीरो हो ना तो इसको हम कहते हैं कि it implies that uh, implies that y1 and y2 are linearly dependent. अगर ये ज़ीरो सपोज आप w is not 0 then y1 and 2 are linearly, अगर ये ज़ीरो हो तो इसका मतलब कि ये linearly dependent है ना. अगर w is not equal to 0 at some x1 and I, then 1 and y2 are linearly independent. अगर Woranskain determinants का वैल्यू 0 हो तो ये दोनों सोल्यूशन लीनियरली डिपेंडेंट हो गया. अगर Woranskain determinants की वैल्यू ना हो तो सोल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है. इसको चलो मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करवा देता हूँ जी. For example, let's suppose we have a differential equation of this type. ये this is an example number 1 जी. For illustration purpose we consider that example y double dash plus omega square y dash. Example number 1, ये y double dash plus omega y dash. This is the second order differential equation with the constant coefficient w. Let's suppose it's a constant value. So when we solve this differential equation, so the solution of this differential equation is once I have explained you the solution of this differential equation, y is equal to a cos omega x plus b sine omega x. That's your solution. One solution y1 is equal to cos omega x. Another solution y2 is equal to sin omega x. अब हम देखना चाहते हैं कि ये दोनों सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं. इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रोसीजर एक्सप्लेन किया था कि f y2 divided by y1 that's equal to sin omega x divided by cos omega x, that is tangent omega x is equal to variable. अगर ये दोनों वेरिएबल है तो इस मीन दैट y2 and y1 are linearly
So in that case y2 and y1 are linearly independent. अब रंसकन डिटर्मिनेंट्स के थ्रू हम इसको देख सकते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं. तो y1 y2 अगर इसकी वैल्यू आप रंसकन डिटर्मिनेंट्स में डाल दें y1 and y2 and either y1 dash and y2 dash, इसमें आप वैल्यूज पुट कर ले y1 किसकी इक्वल है, ये cos ओमेगा x और ये sin ओमेगा x. y1 dash जो है that will be minus omega sin omega x और this will be omega cos omega x. चलिए जिसको हमने रंसकन डिटर्मिनेंट्स में ये सारी वैल्यू डाल दी ना. अब रंसकन डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जब आप इस डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड कर ले तो इससे आता है ये ओमेगा cos ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा sin ओमेगा sin स्क्वायर ओमेगा x. अगर इसे आप ओमेगा कॉमन ले लें तो इसे 1 आता है, तो इसका मतलब कि इट इज इक्वल टू ओमेगा. सो y1 y2 रंसकन डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू आ गया ये ओमेगा. इफ अब इसमें थोड़ा कंडीशन लगाते हैं, अगर एफ ओमेगा इज इक्वल टू 0 देन अगर ओमेगा की वैल्यू 0 हो ना then the two solution will be in y1 and y2 will be linearly dependent. If omega is not equal to 0, if omega is not equal to 0 then two solution y1 and y2 are linearly. फिर उस केस में ये दोनों सोल्यूशन क्या होगा जी, फिर उस केस में ये दोनों सोल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे ना. अब ये दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं जी, ये y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0. इस किस्म के डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने सॉल्व करवाई. जब हम इसको सॉल्व कर ले तो इसकी सेम रूट्स आते हैं जी. एक रूट्स भी इसका 1 आता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, दूसरा भी 1 आता है, तो इसकी एक सोल्यूशन y इज इक्वल टू ई पावर x है और दूसरा सोल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट ले आने के लिए हमने इसके सेकंड सोल्यूशन के साथ x लगाया था. क्यों लगाया था, वो वर्किंग प्रोसीजर में ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया था. y2 इज इक्वल टू x ई पावर x, ये इसकी दो सोल्यूशन है y1 एंड y2. अब हम देखना चाहते हैं कि ये दोनों सोल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं. अब इसको रंसकन डिटर्मिनेंट्स में डालो, ये y1 का वैल्यू है, y1 डैश का वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू, ये y2 का वैल्यू, ये y1 डैश और ये y2 डैश. जब आप इस डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड कर ले तो इस डिटर्मिनेंट्स के एक्सपेंशन से आते हैं e पावर 2x. तो e पावर 2x इज नॉट इक्वल टू 0, तो इट मीन दैट दीज टू सोल्यूशन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो इसके बारे में मतलब आप वो आसानी से जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये सोल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है जी. अब जनरल सोल्यूशन include all solution. A general solution include all solution if the ODE of 1 as a continuous coefficient of p of x and q of x on some interval I, then every solution y is equal to y of x of 1 in the form like this. तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं जी, इस फॉर्म को हम ये c1 और c2 इसमें कांस्टेंट है और ये दोनों इसकी बेसिस है, तो ये हमारे पास इसकी जनरल सोल्यूशन है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, जिसके कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो, वेरिएबल कोएफिशिएंट हो और या वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ दैट काइंड दैट इज कॉल्ड काशी आइदर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर उस काइंड की ना हो, कोई और भी वेरिएबल कोएफिशिएंट हो, तो उसके लिए भी ये सोल्यूशन इस टाइप में एग्जिस्ट करता है ना. Hence one does not have singular solution. अब इस किस्म के डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कोई भी सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो ये पॉइंट आप जहन में याद रखिए.
अब इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है जी, आप इसको देख सकते हैं जी। एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करवाता हूँ जी। इस एक्सरसाइज में क्या मांगा है जी, इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.17 basis of solution corresponding ODE and Woranskain determinants. Find ODE of one for which the given function. इन क्वेश्चन में हमसे मांगा है कि ये जो हमें दो सॉल्यूशन दी है और इससे हमने इन किस्म के क्वेश्चन में हमसे उसके करस्पॉन्डिंग ओडीई मांगा है, तो हम उसकी ओडीई को कैसे मालूम करते हैं ना, और फिर हम इसको वेरीफाई भी करते हैं कि ये दो सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो पहले जी चलो हम इसके लिए ओडीई को मालूम करते हैं कि ये इन सॉल्यूशन से हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे मालूम करते हैं जी। चलिए जी, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैं थोड़ा हैंड से देता हूँ जी। हाँ, एक्सरसाइज ऑन पेज 77, क्वेश्चन नंबर 2, given two solution, given two solution, y1 is equal to cos pi x and y2 is equal to sin pi x. Its general solution will be, इसके लिए सबसे पहले आपने जनरल सोल्यूशन लिखना होगा ना। जनरल सोल्यूशन y is equal to c1 y1 plus c2 y2. This is the general solution of that ODE. अब इसके लिए जी c1 cos pi x c2 sin pi x. c1 cos pi x and c2 sin pi x. ये इसकी जनरल सोल्यूशन है। अब इसके in this we have two constants, so we should have to differentiate to find it corresponding differential equation. We should have to differentiate it two times because it has two constant, because it has a, जितना इसमें कांस्टेंट हो तो उतना ही इसको डिफरेंशिएट करके इससे कांस्टेंट रिमूव कर लो जी। डिफरेंशिएट अगर इसको आप दो दफ़ा करें, वाई डैश इज इक्वल टू c1 फाई और कास की डेरिवेटिव है जी माइनस साइन पाई एक्स, c2 पाई और कास पाई एक्स। इसको अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करें, वाई डबल डैश c1 पाई स्क्वायर माइनस कास पाई एक्स c2 पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई एक्स। इससे अगर हम माइनस साइन कामन ले लें, पाई स्क्वायर भी कामन ले लें, तो ये c1 कास पाई एक्स c2 साइन ऑफ पाई एक्स। सिंप्लीफाई करने से फर्दर आ जाएगा ये माइनस पाई स्क्वायर, और ये किसकी इक्वल है, ये वाई की इक्वल है, ये वाई डबल डैश है। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें, वाई डबल डैश प्लस पाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, तो इससे ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। Hence, equation number 1
is the required differential equation of the above given solution. ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन अभी अबाउ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया. अब इस किस्म के क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये सॉल्यूशन के नहीं है ना. सो नाउ टू वेरीफाई these two solution. Now to verify these two solution are linearly independent, we use a Woranskain determinant. We use Woranskain determinants. Woranskain determinants y1, y2, that is equal to y1, y2, y1 dash, y2 dash, and further y1 is equal to cos pi x, or it is a sin pi x, and this is equal to uh, sin cos की डेरिवेटिव आता है जी माइनस पाई sin पाई एक्स, और इसकी डेरिवेटिव आता है जी पाई cos पाई एक्स. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें जी, इस किस्म के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पहले करवा चुका हूँ जी. पाई cos स्क्वायर पाई एक्स प्लस पाई sin स्क्वायर पाई एक्स, इससे अगर हम पाई कॉमन कर ले तो ये वन आता है, तो इट मीन दैट इट इज इक्वल टू पाई. तो इस केस में रंसकन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या है कि जी रंसकन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू इज इक्वल टू 5, और 5 जो है इट इज नॉट इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट वैल्यू है, 0 की इक्वल नहीं है ना. तो हेंस y1 and y2 are linearly independent solution which form a basis for the differential equation in equation number 1. इसके लिए ये बेसिस बनाते हैं ना जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में है. अच्छा जी, इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. इसमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले आपने इसके लिए करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन को मालूम करना पड़ेगा जी. जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करने में आपके पास सॉल्यूशन में जितने कांस्टेंट है तो उतने टाइम आप उसको डिफरेंशिएट कर लेगा. कांस्टेंट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा. अगर कांस्टेंट बीच से रिमूव नहीं हुआ ना, तो फिर आप उससे कांस्टेंट को रिमूव कर ले, आपके पास जो रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, सो दैट वुड बी द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन. फिर आप उसको वेरीफाई करना चाहते हो कि ये जो हमें दो सॉल्यूशन दी है ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है ना. तो इसकी लीनियरली इंडिपेंडेंसी को देखने के लिए आपने क्या करना होगा, इसकी लीनियरली इंडिपेंडेंसी को देखने के लिए आपने रंसकन डिटर्मिनेंट्स के थ्रू इसको वेरीफाई कर सकते हैं. रंसकन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज को देखो, अगर रंसकन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपके पास
नॉन ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब कि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर रेंस का डिटरमिनेंट्स की वैल्यू ज़ीरो आ गया so the two solution will be linearly dependent। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आप ट्राई कर सकते हो। मैंने रेंडमली क्वेश्चन उठा के करवा दिया जी, और आप इस पे प्रैक्टिस कर ली। जो भी क्वेश्चन में आपको मसला है तो फिर उन क्वेश्चंस को हम साथ साथ में आप मेरे साथ अपनी जो मसले है उसको शेयर कर लो, तो उन क्वेश्चन को फिर मैं सॉल्व करके आप लोगों को उसका भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब ये न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाता है जी। न्यू टॉपिक जो है ये दिस इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो ये नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है ना, लेकिन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन, अब नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ अब इस बुक में मतलब अभी तक हम सिर्फ हाँ मेथड से पहले दो मेथड को पढ़ेंगे जी। एक है मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट और दूसरा है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। फिर मेथड के बाद जो है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेथड है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है, फूरियर ट्रांसफॉर्म है, पावर सीरीज मेथड है ना। तो ये मेथड के बाद ये सारे मेथड को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं जी। ठीक है जी। इंशाल्लाह ये टॉपिक जो है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जी। सो वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। खुदा हाफिज़।